Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? Hope you all are alright. Well then, excellent. Today we are going to start a lesson number 37. It's about unit number 6. And what is the name of this unit? Qaid's vision and Pakistan. Qaid का तसव्वुर और पाकिस्तान. और qaid ने क्या तसव्वुर देखा था? You know very well. Okay. So let's focus on these techniques again. Qaid's vision in Pakistan. Follow these points to understand paragraph. ये points ज़हन में जब तक नहीं होंगे, you can't understand the paragraph. So it's very necessary for all of you to save these points, these steps in your mind, and then follow these steps. Okay. So Qaid's vision and Pakistan का theme देखिए. आप लोग पहले देख चुके हैं. इस थीम को अपने जहन में रखा करें. The theme is the national pride and the role of the hero in the art of nation building. Nation building और कौमी तफाखुर में, कौमी तफाखुर और हीरो का किरदार है कौम की तामीर में. A great leader कायद आज़म was profoundly concerned for his nation as well as for the Pakistan. अपनी कौम और अपने मुल्क के लिए वो बड़े पुरजोश थे. profoundly concerned, बड़े फिक्रमंद थे, इंतहाई शिद्दत से फिक्रमंद. His goal was not only the achievement of Pakistan but also to stabilize the nation and the state simultaneously. ना सिर्फ कौम बल्कि इस वतन के लिए भी आप इतने फिक्रमंद थे अपनी मंजिल को सामने रख के. His goal, उनकी मंजिल क्या थी? पाकिस्तान का असूल भी था और इस नेशन को मुस्तहकम करना भी था, दोनों को यकसा तौर पे. For the accomplishment of this mission, he undertook countrywide tours at the cost of his health. अपनी जान की परवाह, अपनी सेहत की परवाह किए बगैर उन्होंने पूरे मुल्क के दौरे किए और कोशिश की the unity of masses and the welfare of Pakistan and its people, अवाम के इत्तेहाद और पाकिस्तान और इसके लोगों की फलाह के लिए कोशिशें की आपने. Clear? Now look at this. Focus on paragraph number 4. कायद आज़म was a man of strong faith and belief. कायद आज़म आदमी थे, इंसान थे, strong faith, पुख्ता ईमान वाले, and belief और अकीदे वाले, पुख्ता ईमान और अकीदे के बंदे थे. He firmly believed, उन्हें मुकम्मल तौर पे यकीन था that the new emerging state के ये नई बनने वाली या नौज़ायदा रियासत जो है, नई तख्लीक होने वाली रियासत जो है पाकिस्तान, जिसका नाम है, बेस्ड ऑन मबनी है इस्लामिक प्रिंसिपल, इस्लामी असूलों पर मबनी है, कि इस्लाम के असूलों के मुताबिक बनाई गई है. वुड रिफॉर्म इस्लाह करेगी द सोसाइटी, माशरे के एज अ होल, मुकम्मल तौर पे, कि ये पूरे माशरे की मुकम्मल तौर पर इस्लाह करेगी. इन हिज ईद मैसेज, अपने ईद के पैगाम में, सितंबर 1945 सितंबर में, कायद आज़म सेड, कायद आज़म ने कहा, इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, रेगुलेटिंग चला रहा है द होल मुस्लिम सोसाइटी, तमाम मुस्लिम सोसाइटी को इस्लाम ही चला रहा है, चूँकि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ज़िंदगी गुजारने के हर तरीके को अयां करता है, रूल्स देता है. एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का हर शोबा, कोलेक्टिवली इज्तमाही तौर पे एंड इंडिविजुअली इनफरादी तौर पे, यानी हर शोबे को इज्तमाही और इनफरादी तौर पर इस्लाम लेके चल रहा है. आर वी वर्किंग अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ग्रेट लीडर, क्या हम अपने उस अजीम कायद की तवक्कुआत के मुताबिक चल रहे हैं? ज़रा अपने गिरेबान में झांक के देखिएगा. मैं, मेरा बाप, माँ, बहन, भाई, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, मोहल्लेदार, शहर वाले, मुल्क वाले, दुनिया वाले, क्या अपने बिलव्ड लीडर के असूलों के मुताबिक चल रहे हैं? क्या पाकिस्तान में वो असूल हैं? क्या हम उन असूलों को फॉलो कर रहे हैं? बीइंग अ स्टूडेंट, क्या हम लोग असूलों को फॉलो कर रहे हैं? क्या मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, मुल्क को साफ सुथरा रखते हैं? अनफॉर्चुनेटली, आई एम सॉरी टू से, मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि बीइंग अ स्टूडेंट भी हम लोग ऐसी बहुत सी गलतियाँ कर रहे हैं. सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम क्या है कि हम इल्म ही नहीं हासिल कर रहे. हम उस वतन की हिफाजत के लिए, इस वतन की फ़ायदे के लिए, इस वतन की तरक्की के लिए जिस अंदाज से इल्म हासिल करना चाहिए वैसे नहीं कर रहे हैं. हम खाना खाते हैं वहीं पर रैपर्स फेंक देते हैं, ये सारी बुराइयां हमें पाई जाती हैं. हम सड़कों पे आते हैं तो रूल्स की वायलेशन करते हैं. हम लोग घरों में एक दूसरे के हक की वायलेशन करते हैं, एक दूसरे के हक मार लेते हैं. So all these things are being happen in our society. Clear? So are we according to the expectation of our great leader? This is a question mark. So must find out the answer from yourself. अपनी ज़ात से पूछिएगा.
Okay ji, today the Qaid Pakistan is facing numerous challenges. آج قائد کا پاکستان, ہمارے عظیم لیڈر کا پاکستان جو ہے سامنا کر رہا ہے لاتعداد خطرات کا, نیومرس لاتعداد چیلنجز خطرات کا. وی ہیو forgotten, ہم بھول چکے ہیں ہاؤ مچ اسٹرگل مسلمس ہیڈ میڈ, مسلمانوں نے کتنی کوششیں کی تھی, وہ سب بھلا بیٹھے ہمارے آباء و اجداد نے جو کیا. انڈر دا ڈائنامک لیڈرشپ آف قائد اعظم محمد علی جناح, قائد اعظم محمد علی جناح کی ڈائنامک لیڈرشپ, متحرک قیادت میں کیا کچھ کوششیں ہوئی, ہمارے آباء و اجداد نے کیا کچھ کیا, وہ سب یاد رہنا چاہیے ہمیں. وی کین اوور کم, ہم کم کر سکتے ہیں our present difficulties, اپنی حالیہ مشکلات کو, by following the قائد golden motto, پیروی کر کے قائد کا سنہری اصول, سنہری دستور, سنہری مقصد, faith, unity and discipline, ایمان, اتحاد اور نظم و ضبط. These three things are very much important and you must look upon the society. Is there faith? Is there unity? Is there discipline? So تین چیزیں اپنے معاشرے میں, اپنی ذات میں ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے گا کہ ملتی ہیں کہ نہیں ملتی. ایمان ہے, اتحاد ہے, نظم و ضبط ہے ہماری ذات کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر. کلیئر؟ سو وی کین میک آر نیشن اسٹرانگ, ہم اپنی قوم کو مضبوط بنا سکتے ہیں بائی ریممبرنگ, یاد کر کے, اس ایڈوائس, ان کی اس نصیحت کو یاد کر کے, ٹو دا یوتھ, جو انہوں نے نوجوانوں کو دی. اب وہ نصیحت سنیے ذرا. اٹ از ناؤ اپ ٹو یو, یہ اب آپ کے اوپر ہے, آپ کے اوپر جو سن رہے ہیں, ان بچوں کو مخاطب کیا, ٹو ورک, ورک اینڈ ورک, کام کرو, کام کرو اور کام کرو. آج کیا ہم لوگ اس طرح سے محنت کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, اینڈ وی آر باؤنڈ ٹو سکسیڈ, اور ہمیں کامیابی ہونا ہے, ہمیں کامیابی نصیب ہوگی. What is the result of neglecting the advice of the قائد, یہ قائد کی ایڈوائس آج ہم نے نگلیکٹ کر دی ہے. ہم کام کام کام, تو کام سے تو بھاگتے ہیں, ہم لوگ کام نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں کوئی آگے ہمارا کام کر دے. کلیئر؟ ہمیں کامیابی کے لیے بنایا گیا, کامیابی ہمیں ملے گی تو وہ اسی صورت ملے گی جب ہمیں محنت کرنی ہوگی. محنت کریں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی. کلیئر؟ سو کیا ہم لوگ, what is the result of neglecting the advice of قائد, قائد کے ایڈوائس کو, یہ کام 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 والی جب ہم نے نگلیکٹ کر لیا تو آج معاشرے میں حالت آپ کے سامنے ہے. بچے آج کس لیول پہ ہیں, بڑے کس لیول پہ ہیں, ملک کے حالات کیسے جا رہے ہیں, کرائسس ہی کرائسس ہیں. So now love, focus on this activity, translate into Urdu. Islam is a complete code, bas, regulating, bas, the whole Muslim society. Clear? Every department of life, collectively and individually. We have forgotten how much struggle Muslims had made under the dynamic leadership of Qaid A'zam Muhammad Ali Jinnah. We can overcome our present difficulties by following the Qaid's golden motto, faith, unity and discipline. So simple, so easy, translate into Urdu. Look at this second activity, Qaid's vision in Pakistan. Answer these questions. So these are some important questions from this chapter. What can be the positive solution of our present problems? ہماری اس موجودہ مسائل کا کیا ممکن حل ہو سکتا ہے, کیسے حل کیے جا سکتے ہیں, اپنے مسائل کو کیسے حل کریں. How can we become a strong nation, کیسے ہم ایک مضبوط قوم بن سکتے ہیں. Are we working according to the expectations of our great leader? دیکھیے کیا ہم اپنے عظیم لیڈر کی ایکسپیکٹیشن, ان کی توقعات, ان کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. کلیئر؟ کام کر رہے ہیں اس کے مطابق. تو جو بھی آنسر بنتا ہے اس کو دیجیے, بٹ focus on the paragraphs attentively and then find out the gist of that paragraph, okay, and main points definitely. Then you can easily solve all kinds of activities related with that paragraph. Okay, all the best, take care, Allah Hafiz.